सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की 7 फुट से ऊंची प्रतिमा लगी है। संविधान दिवस 26 नवंबर के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत तमाम हस्तियों ने डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। अपनी बारी में CJI ने बताया कि यह प्रतिमा लगाने का विचार उन्हें कानून मंत्री से आया था। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके मेघवाल के साथ अक्सर बैठकें होती है। उन्होंने कहा, मेरी उनके मेघवाल के साथ न्यायपालिका की स्थिति, नियुक्तियों, ट्रांसफर, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हमारा काम 20 मिनट से आधे घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद रविवार की दोपहर को उसके बाद 1.5 घंटे बस समाज की बात करते हैं, विचार की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं। तो उन्होंने यह विचार मेरे दिमाग में डाला। CJI ने आगे बताया, उन्होंने कहा कि डॉ. आम्बेडकर के बतौर वकील एनरोलमेंट को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करता क्यों नहीं। इसके बाद CJI ने अपने स्टाफ की सराहना करने के लिए कानून मंत्री की सराहना की। चीफ जस्टिस ने उमा और अनुराग का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तब अनुराग मेरे युवा इंटर्न थे। उन्होंने कहा कि अनुराग बहुजन समाज से आते हैं और खूब पढ़ते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस मौके पर कहा, न्याय का उद्देश्य इसे सभी के लिए सुलभ बनाकर सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जा सकता है। इससे समानता को भी बल मिलता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, खासकर आज जैसे मौकों पर, क्या हर एक नागरिक न्याय पाने की स्थिति में है। क्यों मनाते हैं संविधान दिवस? साल 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। पहले इसे कानून दिवस के रूप में मनाते थे, अब 6 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि राष्ट्रपति ने भी कहा, 2015 में जब राष्ट्र ने संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। The names of the judges, instead of putting for everybody Honorable Ms. Justice, Honorable Mr. Justice, or everything in Mumbai is in short forms, right? Mahatma Gandhi Road becomes MG Road, so everything becomes in short form because the city is always on the move. So they write HMJ. So when he became a judge, we decided to call him HMJ. So he has continued to be HMJ since the first day that he became a judge and right now. I had a prepared speech really, but I thought, we're in a post-lunch session and we have heard 2 excellent speeches from Mr. Meghwalji first and then thereafter from Justice Gavai. But thank you all of you for joining in. All my distinguished colleagues are here from the Supreme Court. I know it's really a day of rest otherwise for them that they've all come here, and I sincerely thank all of my colleagues who are here in the audience. Chief Justices of the High Courts who are here, judges of the computer committees. This session is in itself very important, but I think this session is not just about the fact that we have set up the statue, but there is something far more profound in the reason why we have set up this statue and what is going to follow now. In a way, Dr. Ambedkar really belongs to all of us. I think gone are the days when we can say that people called him the leader of the untouchables. He is not a leader of the untouchables. He represents really the entire nation. He represents the voice of the nation. And the more one reflects on the life and times and teachings of Dr. Ambedkar, one realizes that his effort was not just to bring about a measure of social reform or to mobilize his own people for whom he led the cause of social justice, but this was essentially an effort to reform Indian society itself. That's why I always believe that while on the one hand India is, ever since the time of just Dr. Ambedkar, facing these and witnessing these large social reform movements of mobilization, and we as judges see how our court is being used for engaging in a public discourse on various aspects of marginalization. Yet I always do believe that bringing social justice to the marginalized is not a project of the marginalized alone. Just as I always believe that bringing gender justice is not a project for women or for or those who are in that sense at the receiving end of the spectrum, but it's a project for all of us.
And in that sense, I think we are all reforming ourselves and we are healing ourselves in our effort to heal the society. So Dr. Ambedkar didn't really stand away from society. He didn't treat himself as a leader of a community of person, the Bahujan Samaj, which was discriminated against for centuries. But he regarded himself as part of the mainstream of Indian society. And as a part of that mainstream, attempted to reform what he regarded was years and years of